Okay, जी, अस्सलाम वालेकुम. Today we are going to use Titanic's dataset to see how sets work. तो सबसे पहले तो मैं अपना टेब्लो में डेटा सेट लोड करता हूँ और ये आपके सामने डेटा सेट लोड हो चुका हुआ है टाइटैनिक का पैसेंजर लिस्ट का. एंड अगर इसको आप गौर से देखें तो जाहिर है ऊपर इसके सारे डायमेंशन और नीचे मेजर्स हैं. However, there is one important thing that we have to really concentrate on. That is this survived measure. अगर मैं इसको शीट में लेकर आता हूँ तो it's aggregating stuff. Now, if I go back to my data source, I see कि ये आपके पास अगर मैं अपने डेटा ग्रिड में चला जाऊं तो पता चलेगा कि survived, where is survived? ये इसमें दो वैल्यूज है बाइनरीज 1 and 0. सो ये नॉमिनल वैल्यूज बेसिकली दी गई है रिकॉर्ड को. और प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये टैब्लो इसको गलत रीड कर रहा है और ये समझ रहा है कि शायद इसको एग्रीगेट करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू नीड टू डू इज चेंज दिस इनटू अ डायमेंशन बिकॉज इट्स नॉट अ मेजर. सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम गोइंग टू डू. मैं इसको राइट क्लिक करूंगा एंड आई एम गोइंग टू कन्वर्ट दिस इनटू अ डायमेंशन. There. The second thing that I need to do is create aliases because 0 or 1 जो है ना that doesn't make sense. So if I clean my sheet और अगर मैं दोबारा इसको लेकर आऊँ शीट के अंदर तो ये सी 0 और 1 तो दे रहा है which is wonderful. And अगर मैं इसके अंदर अपनी वैल्यूज लेकर आऊँ तो I'll get something. ज़ाहिर है ये सारी वैल्यूज ले आया. I don't want the sum of everything. I'm just going to get rid of most of the things. Okay? But I do get the figures in, which is fine. What I need to do is give this a better meaning. तो उसके लिए मैं इसको राइट क्लिक करके एलियासेस पे चला जाऊंगा और एलियासेस में 0 is for people who survive, survive and I'm not really sure about it. ये देखना पड़ेगा. Survive and 1 is for people who died. अच्छा ओके लेट मी जस्ट सी के ये मैंने ठीक किया है या नहीं. because need to maybe check out situation क्या है. just want to get rid of these things and I'm just going to take count of passengers. So 809 survived, 500 died. Looks okay to me. And ये एक काम तो हमने कर लिया. I'm going to clean the shape and अब मैं जो करने जा रहा हूँ ये है कि मैं एनालिसिस करना चाह रहा हूँ उन लोगों के who were the oldest people aboard and who were of course उन लोगों के भी who were the youngest people aboard. So what I'm going to do is first bring in name inside my sheet and also want to bring age inside the sheet. There. So since this is not sorted, I need to sort things. पहले मैं descending order में इसको sort कर लेता हूँ to get the oldest list sorted out. तो यहाँ से मैं sort कर रहा हूँ उसको. Going to sort by field, and the field in this case is age, and I just want the descending order, and that's it. So we've got Mr. Algernon Henry Wilson Barkworth, who was 80 years old at the time. So yes, this seems to be sorted, and what I need to do is just now I need to see कि कितने लोगों का मैं लिस्ट जो है ना वो देखना चाह रहा हूँ.
Let's suppose मैं 1 2 3 4 5. I just want the top five, the data for top five oldest people. So I've selected these five, and the next thing that I'm going to do is create a set. तो ये यहाँ से ये आप देख रहे हैं, ये छोटे ओलंपिक्स रिंग्स दो बने हुए, दे there you go. So just in case you know having difficulty seeing as how sets will be created, तो पहले आप इसको सिलेक्ट करोगे टॉप के जो फाइव रिकॉर्ड्स हैं, उसके बाद यू जस्ट नीड टू हवर योर माउस, सिर्फ माउस ऊपर लेकर आओगे तो यहाँ जाए, एंड देन यू कैन यूज दिस बिलो. तो यहाँ अगर आप देखें तो आपके पास क्रिएट सेट के ऑप्शन है, प्रेस दिस, एंड यहाँ पे मैं इसको कोई मीनिंगफुल नाम दे देता हूँ. Okay, so I've got the top five people selected, and all I need to do is say okay, and there you go. ये एक इसने यहाँ पर सेट बना दिए. Now I also want to create another set of the youngest people. So of course I need to, and this time around let's just do it the other way. यहाँ पे sort करने के बजाय मैं ऊपर वाली option use कर लेता हूँ, यहाँ वाली ascending order में ले आता हूँ. Now you can see that काफी लोगों के हमारे पास record नहीं है. So you can skip those जिनका हमें पता ही नहीं कि उनकी उम्र क्या थी. And we can start from here. 1 2 3 4 5, and again follow the same uh, procedure. You want to create a set of top five youngest people about. There you go. And ये दो तीन चार पांच है. Okay कर दिया. And there's one more thing that I need to do. I don't need to do it, but it's a better practice to do it. मैं ये चाह रहा हूँ कि जितने भी सेट्स हैं वो एक ही जगह पे आ जाए. So what I'm going to do is turn my group by folder option on, and I'm going to create a new folder. I'm going to call it sets, and I'm going to throw these two sets inside this so that I know कि कौन मेरे sets एक ही जगह पे नहीं है. I'm going to clean this up, and let's just create uh, a tree map. कोई भी विजुअलाइजेशन आप वैसे बना सकते हैं इसमें, बट ट्री मैप बनाकर देखते हैं हम. I want the names as well as the ages of the people aboard, and I'm going to create a tree map. There you go. एक अच्छा ट्री मैप बन गया मेरे पास, but there's just simply too much information inside it. और विशेष अगर मैं इसमें नेम को लेबल में ले आऊं, I cannot even see them because you know they just it is just too cluttered. One thing that I would like to do is bring some information in my tooltip. टूल टिप के अंदर मैं कुछ इंफॉर्मेशन जरूर लाना चाहूंगा. वुड लाइक टू सी कि उनकी डेस्टिनेशन क्या थी, whether they survived or not, जेंडर क्या था, टिकट नंबर क्या था. So these are the stuff that I want. Uh, at fare, of course, I want to see how much did they pay. Uh, so all of these are in toolbars. और ये देखिए toolbar के अंदर आ रहे हैं. Now, since I didn't really want so many records in the first place, what I can really do is use this sets. तो सेट में अगर मैं ओल्डेस्ट पीपल को फिल्टर में ला के ड्रॉप कर दूं, तो सी हाउ द सेट चेंजेस. नाउ आई हैव द इंफॉर्मेशन रिजर्व टू द ओल्डेस्ट फाइव इंडिविजुअल्स हु वर अबाउट. देयर यू गो. ये अब आपके पास है. ठीक है. तो some of them survived, some of them did not survive.
सो अगर आप सिर्फ सर्वाइवल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाह रहे हैं तो यू कैन सिंपली ब्रिंग दिस सर्वाइव इनटू कलर एंड देयर यू गो. So these are the two who did not survive. These are the people who survived. And if you want to, you can obviously uh, change the colors, edit colors. So people who survived should be green, who did not can be red. And this just gives your data that extra bit of meaning that is required. And since अब ये चूंकि मैनेजेबल है, इसमें आप लेबल के अंदर और चीजें भी डाल सकते हैं. लेबल के अंदर जो चीज डालोगे वो जाहिर है वो नीचे आ जाएगी. लेबल में जाकर आप जो बाकी स्टफ है उसको बड़ा छोटा कर सकते हो अपनी मर्जी के मुताबिक. मैन्यूवर कर सकते हो. इट्स रियली अप टू यू हाउ यू वांट टू show the data, right? And one thing that I usually, like to do is place things in a particular order. You can do that as well. आप प्ले कर सकते हैं इसके साथ कि आप कैसे अलाइन करना चाहते हैं टेक्स्ट को. There you go. That is one thing. Now, all of a sudden, if somebody says that they want to look at the fate of five youngest people as well, what do? You get rid of this from the filters, and we're going to do is simply bring this top five youngest people's set into the filters like this. There you go. So, you know, अपने पास ये आ गया है record. Youngest is Miss Keen. And you know what? I think हमने ये गलत काम किया है. और and let me just very quickly rectify. I think हमने aliases गलत दे दिए. I'm going to go to survive and I'm going to change aliases. Zero actually was died and one was survived. So what I'm going to do is कर देते हैं इसको और survive. I think I got the spellings wrong. Survive and died के spelling भी ठीक कर देते. Say okay. Good. So now all I have to do is change the colors here. Died is red, survived is green, and there. So how did I get to know that? Because I know for sure that most of the kids actually survived, and this character is actually pretty famous. Uh, Miss Elizabeth uh, Gladys Dean, also known as Milivina. So if any of you have read anything about Titanic, I think this lady actually lived a very long, uh, you know, life. ये मेरे ख्याल में कोई 90s के अंदर फौत हुई है. तो one of the last people who sort of died who actually were part of the Titanic incident. तो ये हमारे पास सिनेरियो है. इसी तरीके से आप किसी भी तरीके से जो है ना वो बना सकते हैं. किसी भी डायमेंशन के पर्सपेक्टिव से चीजों को देख सकते हैं और आप सेट्स को यूज कर सकते हैं. तो व्हाट्स द इशू विद द सेट्स? ये इसको स्टैटिक सेट्स कहते हैं. एंड द इशू इज दैट इफ फॉर इंस्टेंस यू आई जस्ट वांट टू सी द टॉप 10, आई कैन नॉट डू दैट. बिकॉज अब अगर गौर करो यहाँ पे तो मुझे पूरा प्रोसेस दोबारा करना पड़ेगा to get the top 10. I cannot really, these are the only record at play. तो इसको कैसे रेक्टिफाई किया जाए? ये काम जो है ना अब इसका एक नई शीट बनाते हैं. एंड व्हाट आई वांट टू डू इज लेट्स जस्ट डिलीट दिस टू. I'm going to delete this static uh, sets and of course since ये यूज हो रहा है तो इसको प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे. लेट मी जस्ट डिलीट दिस फर्स्ट. एंड ऑफ कोर्स इसमें कुछ भी नहीं है. तो अब सेट देखे डिलीट हो गए. लुक्स गुड. सो जैसे ग्रुप्स के अंदर आप किसी डायमेंशन में जाके कुछ क्रिएट कर सकते हैं ना, इसी तरीके से आप
set भी create कर सकते हैं. For instance, if I go to name, I can actually create a set here like this, right? And I can say oldest people aboard. That's the set I want to create, right? And ये सिर्फ और सिर्फ जो डायनेमिक है वो आपको इस तरीके से बनाना है. एंड इफ आई गो टू टॉप, जर्नल है, कंडीशन, कंडीशन पे भी मैं आऊंगा, मगर लेट्स जस्ट लुक एट टॉप. एंड बाय टॉप पे आप बाय फील्ड में जाके डिसाइड कर सकते हो कि कितने करने. लेट्स सपोज आई जस्ट वांट द टॉप 10 people and by age, and I would just, it doesn't really matter कि ये आप क्या कर रहे हो, ज़ाहिर ग्रैनुलरिटी के उस लेवल पे हो जहाँ पे ये चीज मैटर नहीं करती, एग्रीगेशन. So this is what we have, and let's just say okay, oldest people aboard, और उसको मैं सेट्स में ऐसे फेंक देता हूँ. इसी तरीके से नेम पे जाके I'm going to create a new set, and this time I want is the youngest people aboard. And what I want to do is go to top, bottom 10 मुझे चाहिए by age. तो ये अब थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक जरूर है, बिकॉज ऑफ वन लिटिल रीजन. एंड द रीजन इज दैट देयर आर लॉट ऑफ null values inside it, but it's worth the try. We're going to have a look at this, see whether it works or not. So looks good enough. हमें bottom 10 चाहिए each by some से. Okay, and there we go. So let's just very quickly create the name and age. age किधर चला गया? There we go. नेम और एज का हम एक ट्री मैप बना लेते हैं. एंड लाइक यू नो, always there are always, it's got a lot of records. It's very difficult to actually analyze things or see things in some kind of a coherent manner. Let's just bring in some information. I want to know the gender. I want to know whether they survived or not. Sorry, my Zoom just keeps disconnecting. तो ये पता नहीं अब फाइनल जब अपलोड करूंगा तो मैं कैसे लगेगा. बहरहाल just try to go back to Tableau. Right. So यहाँ पे तक थे हम. I wanted to bring in, I wanted to see the gender, I wanted to see whether they survived or not. I wanted to see their ticket number. I wanted to see their boat number, their cabin number, their home destination. That's plenty of information. And I'm going to bring everything in the tooltip like this. जब मैं अपना माउस ओवर करूँ तो मुझे ये इंफॉर्मेशन नजर आना शुरू हो जाए. Finally, let's see whether the sets that we created work or not. I'm going to bring the oldest people into the filters, and there you go. 10 का हमने फिल्टर बनाया था, and it works very well, right? And हमें एक अच्छा अंदाजा हो रहा है. टॉप 10 में अराउंड 70 से 80 years old लोग मौजूद थे. Now, if you want to sort of see this data differently, you can. फॉर इंस्टेंस आप सिर्फ अगर मेल और फीमेल यानी जेंडर या सेक्स के बारे में देखना चाह रहे हैं कि किसका क्या जेंडर है, यू जस्ट ब्रिंग दिस इनटू कलर, राइट? एंड देन व्हाट यू कैन डू इज ऑब्वियसली गिव कलर्स. मतलब फीमेल को हम पिंक कर देते हैं, मेल को ब्लू कर देते हैं, ओके करते हैं. देयर इट. सो देयर यू गॉट वेरी नाइस पीसेस ऑफ. तो मुझे फीमेल एक है, बाकी मेल है इन द ओल्डेस्ट ब्रैकेट. एंड ऑफ कोर्स इसको आप और तरीके से भी देख सकते हैं. यू कैन सी वेदर यू नो इस पर्सपेक्टिव में हाउ मेनी पीपल सर्वाइव्ड एंड हाउ मेनी वर डेड. सर्वाइव को अगर मैं यहाँ पर ले आऊँ तो दे, तो या अकॉर्डिंग टू दिस रिकॉर्ड most of the people died, and these two
survive. Unfortunately, most of these people died. ये था top 10. Now, just keeping in view why we created sets, I'll tell you why. इस जो डायनेमिक सेट का सबसे बड़ा फायदा है कि जब आप एडिट फिल्टर में जाते हो इसके और जस्ट see if I can go here and edit my set here. तो टॉप पे जाके आप चीजों को तब्दील कर सकते हो। मसलन यहाँ पे अगर 5 है, 10 है, तो 5 कर सकते हो एंड इट्स गोइंग टू वर्क immediately. All you have to do is just go here, edit sets, और टॉप के जितने भी चाहिए, लेट्स जस्ट गो टॉप 50 and this top 50 oldest people की लिस्ट आ गई है and it has arranged it according to how many died and how many survived. So that's how easy it is with sets. I'm going to get rid of this and I'm going to bring the youngest filter inside. And I have this strange suspicion that this would not work, primarily because its data set में बहुत सारी null values थी. So maybe we need to remove those null values or maybe just give some values, for instance, ending की values में दे सकते. That is why this youngest वाला जो है ना did not work. And if you go to top, तो top basically वो null values को ले रहे हैं. So yeah, that is a bit unfortunate because डेटा हमारे पास पूरा नहीं था. आमतौर पर डेटा हमारे पास जब पूरा होता है तो तभी अच्छे एनालिसिस मुमकिन होते हैं. बट आई थिंक आपने डायनेमिक इसमें दोनों मैंने डिस्कस कर लिए. और जो है एक चीज जो है ना मजीद है, व्हाट इफ यू रियली वांट टू sort of you know change things on the run, on the go, on the fly. उसकी थोड़ी सी बात जरूर करेंगे कि डायनेमिक ही हो बेशक, बट हमें अगर हमें चीजें चेंज करनी है इन टर्म्स ऑफ हाउ मेनी रिकॉर्ड्स दैट वी वांट, यहाँ पे जाके ना चेंज करनी पड़े. फिर यहाँ पे जाना पड़ता है, फिर टॉप पे देखना पड़ता है और करना पड़ता है ऐसे. So we want to create sets that allow us to sort of change things on the fly. So let me just get rid of everything here and I'm going to delete these sets as well. I'm going to delete this as well. And what I'm going to do is introduce a new idea, and that's called parameters. So create a parameter, आप right click कर सकते हैं यहाँ पे. You can create a parameter right by clicking inside it. तो ये देखो ये एक parameter आ गया. So we can name it something. We can say passengers. Oh, let's just get all passengers, and I'm going to say that this is an integer because I have integer है and one integer है, इसमें से दो integer कह रहा हूँ मैं. And अगर मैं इसकी रेंज में चला जाऊँ, आई वुड से कि मिनिमम और मैक्सिमम यानी 1 से लेके 50 तक की ब्रैकेट दे दो. And step size is 1. Don't worry about these. You'll get to know what this means once we sort of use this. मिनिमम 1, मैक्सिमम 50, यानी 1 से लेके 50 तक जो है ना कोई बंदा सिलेक्ट कर सके. द स्टेप साइज 1 एंड ऐसे ओके, पैरामीटर बन गया. And now I'm going to go back to name and I'm going to create a set, regular practice, right? And I'm going to say uh, oldest passengers aboard set. Try to be descriptive when it comes to giving names, right? Then come to top and by field में अब आप यहाँ पर नंबर नहीं देंगे. नंबर देने के बजाय you just click here and you're going to use this parameter, जो कि आप ये parameter है और ये automatically यहाँ पे दिखा देगा. So what we want is see top old passengers, the passengers with age, and we want the sum as an aggregate. It looks good enough. And we'll say okay, and we'll throw this right inside the sets. और ये ठीक लग रहा है. So let's just try it out. I'm going to do the same thing
एज और नेम को पकड़ा और ट्री मैप बना दिए। ये ट्री मैप आ गया and just put in certain things inside my tooltip just to make it a little more descriptive. Okay. And what I'm going to do is now throw this new set that I made right inside the filters and see what happens. There you go. So right now it's just showing one record. Why? Because हमने अगर आपको याद हो तो पैरामीटर अपना वन से स्टार्ट किया था। I'm going to right click this and click here inside show parameter। ये देखें ये पैरामीटर शो कर रहा है वन का। So जैसे जैसे इस पैरामीटर को मैं आगे करता जाऊंगा you'll see that the entire thing will change। Let's suppose I wanted to see top 5। Just going to push it to 5 and ये देखो 5 टॉप 5 दिखा रहे एंड आप इसको थोड़ा सा कस्टमाइज भी कर सकते हैं अगर करना चाहिए तो। स्लाइडर और टाइपिंग भी हो सकता है। तो वो टाइप इन दैट इज गुड इनफ। 10 करोगे या चलो और 20 करोगे तो 20 रिकॉर्ड से खाना शुरू कर देगा। सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये आप यूज कर सकते हैं इसको एज यू विश। और दिस अ वेरी वेरी पावरफुल टूल दैट अलाउस यू टू शो डेटा ऑन द रन टाइम। एक ही वक्त में आप ये जो है ना चीजें इसमें दिखा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड। तो टॉप के अलावा जाहिर है आप बॉटम भी यूज कर सकते हो और चीजों को काफी डीपली लेकर जा सकते हो। Now remember that these are really advanced concepts and these will need practice. That is precisely why I went through the pain of making this video and I hope that ये सही तरीके से record हो जाए। And practices, I'm going to give you an assignment exactly on the same data.